Okay, so hello everyone. In the last video, we discussed about polynomial function and rational function. इन दोनों के ग्राफ्स हमने डिस्कस किए थे. In today's video, we are going to discuss about irrational function, exponential, logarithmic, and modulus function. इनके graphs we are going to discuss in this video. So let's go. इन चारों के graphs we are going to discuss. So first of all, the thing is कि we need to understand कि what is a irrational function, and then irrational function we know if some function is in form of p upon q, then it is a rational function. ठीक है, q should not be equal to 0. In irrational function, irrational function, in irrational function, that's right, the algebraic function containing terms having non-integral powers of x are called irrational functions. Okay, so first of all, इसके अंदर we will discuss the graph of fx is equal to x की power 1/2 or root x. ठीक है, this is the definition we have seen right now. The algebraic function containing terms having non-integral powers of x, जिसके अंदर x की non-integral powers हो. ठीक है, जैसे x की पावर 1/2, x की पावर 1/3. सो अगर इस इक्वेशन को, when I look at this equation, then you will see कि this equation is, it looks somewhat like it is in portion of a parabola. Okay, अगर it looks like a portion of parabola, y square is equal to x, which lies above x-axis, x-axis. Okay, इसका डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे. इसका डोमेन क्या होगा? इसके अंदर domain of this function would be from 0 to infinity. नेगेटिव वैल्यूज तो पुट नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे रूट के अंदर, देन इट विल बिकम इमेजिनरी. रेंज के अंदर रेंज वुड बी अगेन from 0 से infinity. So before we draw this graph, okay, we need to see something. कि there is one thing in this कि we have to see कि let's note it down. बाकी और functions के अंदर also it will be valid for you. So this is a condition. If fx is equal to x की power n, ठीक है, and gx कोई और फंक्शन है which is x की पावर 1/n, ठीक है, then fx and gx are inverse of each other. तो ये दोनों फंक्शन, ये और ये फंक्शन, both of these functions are inverse of each other. ठीक है, if such a condition sets in, then we will
do something like this कि fx which is equal to x की power n and gx which is equal to x की power 1 upon n is an mirror image about y is equal to x. जैसे x स्क्वायर है, x की पावर 1/2 है, या फिर x क्यूब है, x की पावर 1/3 है. Both those functions are mirror images of inverse of each other. Then जो भी इनका इमेज बनेगा या फिर जो भी ग्राफ बनेगा, that will be y is equal to x वाली लाइन के जस्ट मिरर इमेज बनेगा. जैसे जैसे इसका ग्राफ हम बनाते हैं पहले आपके लिए. जैसे ठीक है, जैसे अगर मैं ये है y is equal to x, y is equal to x ये है. ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ लास्ट वीडियो में हमने देखा था, आपको भी पता होगा. एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरीके का था? समवट लाइक दिस. एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है. समवट लाइक दिस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है. इफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो इसका बिल्कुल मिरर इमेज अलोंग वाई इज इक्वल टू एक्स. तो लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर. इसकी बिल्कुल मिरर इमेज y is equal to x, x की पावर 1/2. This is the graph of the function. This is the graph of y is equal to root x. ठीक है, this is s axis, this is y axis. ठीक है. Now I want you to pause the video here and please try making graph of y is equal to x की power 1/3. ठीक है. Pause the video and try the solution. If you don't know, then please go ahead. So in this, अगर मैं y को gx मानूं तो this is image of अगर sorry gx is equal to x की पावर 3 about y is equal to x. ठीक है. देन इसका डोमेन क्या है? इस फंक्शन के अंदर आपको डोमेन इज रियल नंबर एंड रेंज ऑल्सो रियल नंबर. ठीक है. तो इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा? आई होप आपने बना लिया होगा ग्राफ. बाकी हैव अ लुक. अगर गलत भी बनाया है कोई बात नहीं, इट्स फाइन. एक्स एंड वाई. सो पहले y इज इक्वल टू एक्स बना लेते हैं. ठीक है, पहले बना लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स. इस तरीके का कुछ बनेगा. दिस इज y इज इक्वल टू एक्स. नाउ फर्स्ट वी विल मेक द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरीके से बनाया था हमने? अरे थोड़ा सा इस तरीके से. ठीक है. दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अब इसका जस्ट मिरर इमेज वी हैव टू मेक. तो मिरर इमेज किस तरीके से बनेगा? मिरर इमेज विल बी लाइक दिस. थोड़ा सा गलत हो गया.
somewhat like this. Yes, so this is y is equal to x की power 1/3. ये ग्राफ बना है. Okay, so I hope you understood this. Now moving ahead with some other graphs. Irrational functions का graph हो गया. Now we come to other functions. The next one we have to discuss is modulus function. Modulus function graph we will have to discuss. Y is equal to mod of x. ठीक है, this is the function mod of x अगर x की वैल्यू greater than 0 होती है and minus x if x is less than 0. Okay, when you look at it, it is an even function whether you put a negative value or a positive value, because it's a modulus function, the value will always come out positive. So it is an even function. अगर even function है, then what is the condition? Symmetric about y-axis. Symmetric about y-axis. Now domain of the function is real number, any number you can put, and range of the function belongs to 0 to infinity. So by looking at these conditions, you can see that it's an even function, symmetric about y-axis, and domain and range is this. So you can plot the graph, you can try for yourself and by pausing the video here only, or you can have a look as we are making the graph. So ये negative values तो लेगा ही नहीं, ठीक है. अगर ये x है, ये y है. If range of the function is 0 to infinity, then it is not going to take the negative values. अगर negative values नहीं ले रहा है, then what will it become? It will become like this. This is for y is equal to x and y is equal to minus x. Minus x. ये हुआ आपका मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है. नाउ next one, the last two functions which we are going to discuss are very very important functions. x बहुत जगह पे यूज होते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपने देखे हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस which have कि सम लाइक a की पावर x के अंदर जो भी फंक्शंस हैं, ठीक है, वो a है, a की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होती है एंड इट कैन बी एनीथिंग एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है. सो फंक्शन जो है a की पावर x है जहाँ पे a is greater than 0 and a is not equal to 1 and x belongs to R where domain जो है वो आपकी R में होगी and range जो है आपकी 0 to infinity. Range is 0 to infinity. now इसके अंदर दो केसेस बनेंगे. those two cases like case 1 is when a की value is greater than 1 and case 2 is when a की value is between 0 to 1. नेगेटिव वैल्यूज तो हो नहीं सकती, नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, देन दो ही केस बनते हैं, 1 भी नहीं हो सकती है. वी हैव सीन फ्रॉम हियर ना कि दिस इज द कंडीशन व्हिच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है. सो यस प्लीज सी कि अगर a is greater than 1 then fx जो है that will be equal to y is equal to a की पावर x, ठीक है.
अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, अगर a जो है ये 1 से बड़ा है, मान लो 2 की पावर x और 3 की पावर x, ठीक है, तो एज द वैल्यू ऑफ द x इज इंक्रीजिंग द फंक्शन विल आल्सो इंक्रीज। जितना x के वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना ही वैल्यू बढ़ेगा, इंक्रीजेस with increase in x, increase in x, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो the graph of the function will be roughly like this, roughly like this, no sorry, graph of the function will be like this, ठीक है, this is y is equal to ax, ठीक है, where a is greater than 1 का function is 0 1, okay, x axis y axis. So this is the graph of y is equal to a x when the a is greater than 1. Now second case, case number 2. Now case 2. What is case number 2? Case number 2 is when a की जो वैल्यू है वो आपकी जीरो से और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, देन फंक्शन जो है a की पावर x है, अगर मान लो 0 से 1 में डिस्कस करती है तो 0.5 की पावर समथिंग, ठीक है, अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच के अंदर है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, व्हाट विल हैपन टू द फंक्शन? फंक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन x, जैसे जैसे x को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज करेगी, कि 0.5 की वैल्यू 2, 0.5 की वैल्यू 4, 0.5 की वैल्यू 10, क्योंकि ये 1 से कम है और 0 से ज्यादा है, देन दिस वैल्यू विल कीप ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है, तो ग्राफ विल समवट लुक लाइक दिस, graph will somewhat look like this. x y is equal to ax का ग्राफ जो है इस तरीके का ग्राफ कुछ बनेगा, ठीक है, so this was the exponential function for you. Okay, major part of functions we have discussed here, ठीक है, now the last section of this video we have logarithmic function. Logarithmic function, this is the last section of the video. So logarithmic function is what? अगर log within base a x, ठीक है, where a is greater than 0 and a is not equal to 1, a की वैल्यू 0 से ज्यादा होगा and a cannot be equal to 1, so domain of the function क्या होगा? Domain of this is all real positive numbers. ये वाला डोमेन होगा and range of this function is defined with set of all real numbers. So डोमेन तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए वी कैन नॉट फाइंड डिफाइन द फंक्शन, ठीक है, रेंज जो है दैट विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. नाउ when a is greater than 1, so y is equal to ax जो है वो क्या था? Strictly increasing and
when A is strictly decreasing. सो एक तरीके से log फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स ही तो है. द प्रॉपर्टी वी टोल्ड यू कि एफ एक्स एंड जी एक्स वाली, तो ये फंक्शन उसका जस्ट inverse function है, then it will always, then it will become the mirror image of the function of exponential functions. So log ax is inverse of this function. इस फंक्शन का इनवर्स है. तो यहाँ पे ग्राफ्स, लेट मी मेक द ग्राफ. ठीक है. So x y x y 10 10 पे काट रहा है. दिस इज फॉर दिस वन, एंड अगर a की वैल्यू एक से ज्यादा है then the function is like this. So these are the two graphs of log function अगर वो वैल्यू पे डिपेंड करता है. ठीक है. So this is all the functions we have discussed here, graphs of functions. There is another way, using calculus also we can define these functions, but that will we will discuss in the next video. So till then, have a good day and enjoy. Please like, share, subscribe the channel, and thank you.